Right. So let me know once my screen is visible, guys. Yes, sir, it's visible. Great. So let's begin with today. And so our today's purpose will be actually working with objects. Okay, we will be working with objects today. So for that, just open the setup for our own reference purposes. And let's open. Right. So when we were working with the previous class, we got some idea of what are collections. Right. Now with collections we were able to create your basic variables. हमने basic variables जो थे उनके list बनाया, map बनाया, हमने set बना के देखा what are the differences and all those things we worked. But today what we will be doing is we will be actually working with the objects in Salesforce because actual use cases में आप जो भी variables वगैरह बना के जो भी operations कर रहे हैं that is your not the main purpose. आपका main purpose रहेगा to modify the data in Salesforce जो backend में saved है. However you do that. And उसके लिए आपको चाहिए objects. So let me do one thing. I'll just blank out this class. Now let's take any of the standard objects we have. Right. If I go to object manager, let's work with the account object since the class is named I think account class only. Yeah, account demo class. Fine. So हम लोग account को लेके ही काम करेंगे. This is loading a bit slow. Not sure why. No issues. चलो जब तक ये ओपन होता है हम वापस जाते हैं डेवलपर कंसोल में. Now what was the basic syntax जो हम वेरिएबल बनाने के लिए यूज कर रहे थे? Anyone? Sir, first data type, then variable Yes. name Okay. equals And to value, value. then Fine. semicolon. Good. Right. Now basically this is the structure which we are following, right? Right. Now for any object, right? What did it open? Right. For any object, if I want to do the same thing, the structure is similar. Okay. So agar, if I say the structure is similar, then that should mean if I want to create an account, the structure should be account. Data type is account, right? Then the variable name and is equals to value. Now logically is this part clear to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Fine. तो हमारा डेटा टाइप वेरिएबल का नाम इक्वल्स टू वैल्यू, ये तो नॉर्मल सिंटैक्स है. अब जो कॉम्प्लिकेशन आ रहा है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट इज नॉट जस्ट वन नंबर, राइट? कि इक्वल्स टू हमने वन लिख दिया या फिर इक्वल्स टू में हमने से स्प्रिंग में कोई स्ट्रिंग डाल दिया, कोई वैल्यू डाल दिया. इट्स नॉट दैट. एनी ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड इज अ कलेक्शन ऑफ फील्ड्स, राइट? हर रिकॉर्ड के अंदर हमारा मल्टीपल फील्ड्स हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं यहां से कोई भी अकाउंट खोलता हूं, लेट्स ओपन दिस वन. सो व्हाट यू विल सी इज इसकी ज्यादातर फील्ड्स के अंदर अलग से वैल्यू है, राइट? सो दैट मीन्स व्हेन on the right side of account I want to set an value, then it cannot be just one value. It has Multiple to value. be value of all of those fields. So how do we set that? Now the most basic use case होगा कि आप एक just variable बना लो, फिर values एक एक करके आप set कर सकते हैं. That is something you can do. Now how you will do that? It is very similar to जैसे हम लोग list बना रहे हैं, is equals to new account. That's it.
ये आपने एक ब्लैंक वेरिएबल बना लिया। नाउ द ओनली इशू इज दिस ब्लैंक वेरिएबल आपके किसी काम का है नहीं, आपको चाहिए डेटा, आपको सेट करना है वैल्यू। तो देन व्हाट इज द ऑप्शन यू हैव? एक बार आप जब अकाउंट टाइप का वेरिएबल बना लेते हो तो सेल्सफोर्स क्या करता है, वो बोलता है कि ठीक है, इसका हमको डेटा टाइप पता है, तो हम इसके अंदर से देखते हैं अकाउंट डेटा टाइप में बैकएंड में क्या क्या वैल्यूज है, वो सब हम फिर यूआई पे सेट करने देते हैं इनको कोड से। नाउ ऑन अकाउंट लेवल, ऑन द बैकएंड, व्हाट आर द वैल्यूज वी हैव? वी हैव नेम, अकाउंट नंबर, ओनर आईडी, ऑल ऑफ दिस आर फील्ड। हर एक अकाउंट के अंदर ये वैल्यूज है। So I want to set the name. Let me set the name as C. जैसे ही मैंने डॉट डाला, सारी फील्ड्स यहाँ पे आ गई। What does this mean? Compiler has understood कि इस वेरिएबल का एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है हमारा एक ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसमें अगर कुछ भी हमको डाटा सेट करना है तो हमको जरूरत पड़ेगी इसकी फील्ड्स की। तो वो सारी फील्ड्स आपका फेच करके ले आए कि ये फील्ड्स है इस ऑब्जेक्ट पे, अब आप सेट कीजिए। नाउ वी वांट टू सेट द नेम, राइट? तो हमने नेम सेट कर देते हैं। लेट्स सेट द नेम एज टेस्ट अकाउंट। Now, is this clear? Yes. Let me create a method actually. Public static count demo, right? And इसके अंदर हम ये सब काम करते हैं। Now, यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. Right? Let's check if my variable is getting the value set or not. तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करके देख लेते हैं। And I'll print the whole variable. पूरे अकाउंट को हम प्रिंट करते हैं कि क्या डिस्प्ले होता है। Okay, we are getting a problem. Method. What? If you see the log, so this is how it has created this variable. हमने प्रिंट क्या किया था, var name. So in the backend, what is this variable saved as? It is saved as one account, जिसके अंदर एक फील्ड है name, जिसको हमने सेट कर दिया है। So this is how you create a variable of any data type, any object type, and आपको जब वैल्यू सेट करनी है तो आपको डॉट ऑपरेटर का यूज करके फील्ड का नाम देना पड़ेगा। Now you have to remember two things. One, when setting the type name of the field, you will have to use the API name. Okay, जो भी फील्ड का API नेम है आपको वो सेट करना पड़ेगा, उसी से आप कोड में एक्सेस कर सकते हो। If I write account site like this, it won't work. It has to be just the API name, which is just site. That is one of the reason जब हम फील्ड बना रहे थे हमने बोला था ना कि आपका लेबल और API नेम शुड बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इफ पॉसिबल, क्योंकि यूआई पे सपोज ये दिख रहा है इंडस्ट्री, और बैकएंड में अगर मैं इसका एपीआई नाम रख दूं समथिंग अदर लाइक मैन्युफैक्चरर, तो जब कोई खाली कोड देख रहा होगा तो क्या कोड से उसको पता चलेगा यूआई पे कौन सी फील्ड है ये?
ही विल लुक फॉर मैन्युफैक्चरर कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इनपुट ही नहीं हो रही, बाद में यहाँ पे आके डिबग करके देखेगा तो पता चलेगा अरे मैन्युफैक्चरर ही इंडस्ट्री, राइट। दैट इज व्हाई फॉर द स्टैंडर्ड फील्ड्स आप देखेंगे इट्स आइडेंटिकल, एंड फॉर द कस्टम फील्ड्स इट इज सिमिलर, यू जस्ट हैव अंडरस्कोर सी एट द एंड, ठीक है। तो एपीआई नेम इसीलिए वी ट्राई टेंड टू कीप सिमिलर, ताकि कोड देखे ही आदमी को समझ आ जाए कि कौन सी फील्ड यूज हो रही है। टिल दिस पार्ट इज इट क्लियर और नॉट? कि Yes, वेरिएबल sir. कैसे Clear. बनाना है ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टाइप। Yes. सर Yes, आपने now इसमें this, सर हाँ, हेलो yes, सर आपने इसमें इंसर्ट यूज क्यों नहीं किया था, इंसर्ट और वेर नेम करके, क्योंकि सर कुछ जगह मैंने अभी कोड खाली में हम करते वेरिएबल हैं ना। बनाया है, मैंने डेटाबेस में तो कुछ डाला ही नहीं है। आई हैव तो नॉट सर इवन ये थॉट आप अबाउट डेटाबेस। तो सर आपने जो टेक्स्ट अकाउंट बनाया है तो सर वो वहाँ पर बैकएंड में सेव नहीं हुआ होगा सर रिकॉर्ड। नहीं, बैकएंड में क्यों सेव होगा? ओके सर, मुझे आई थिंक सर मुझे लगा कि सर ये टेस्ट अकाउंट जो है वहाँ पर सेव हो जाएगा बैकएंड में। नहीं, ठीक है आप कोड में जितना कुछ आप कर सकते करिए, दैट इज द डीएमएल ऑपरेशन, वी विल मूव ऑन टू दैट नेक्स्ट, बट राइट नाउ ओके अभी ओके तक वेरिएबल कैसे बनाना है मैंने जस्ट बार बार बोला, मैंने इन्हें बोला अकाउंट कैसे बनाना है, मैंने बोला वेरिएबल कैसे बनाना है ऑफ ओके ऑब्जेक्ट साइज, राइट। Now this same thing will be applicable for all the other objects. Opportunity का आप बनाना है आपको, opportunity record is equals to new opportunity, right? And then record dot जो भी opportunity का field है आप set करेंगे, value set करेंगे, and it's the same thing. कोई custom object होगा तो से object का नाम है test, तो आप बनाएंगे test c record is equals to new test underscore, only this difference. कस्टम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बनाएंगे, अंडरस्कोर सी ऐड हो जाएगा, राइट, एपीआई नेम के अंदर। नाउ टिल नाउ व्हाट हैज हैपेंड है, ये हमने वेरिएबल तो बना लिया, बट ये खाली कोड के अंदर एग्जिस्ट करता है। ओके, दिस इज नॉट सेव्ड इन द बैक एंड। व्हाई? क्योंकि मैंने जस्ट कोड के अंदर बनाया है, डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा कुछ। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस डेटाबेस में आप कमांड भेजोगे कैसे, दैट इज कॉल्ड द डीएमएल ऑपरेशंस। Now, what are the DML operations available to us? Basically, there are 5 DML operations available to us, the basic DMLs. One is insert, one is update, then we have delete, undelete, and merge. These are the 5 basic operations you have. Other than these 5 operations, एक just hybrid operation है, which is a combination of insert and update. उसको बोलते हैं हम upsert, but it is not a basic operation. Okay. Now, हर इस ऑपरेशन का एक पर्पस है, राइट। व्हाट डू वी मीन बाय इंसर्ट? इंसर्ट का मतलब है एज सिंपल एज दिस कि ये जो हमने वेरिएबल बनाया है ये अभी मेरे खाली कोड में है, मुझे चाहिए ये मेरा बैकएंड में डेटाबेस में क्रिएट हो, राइट। यहाँ पे जो अकाउंट्स का लिस्ट है यहाँ पे इट इज नॉट प्रेजेंट, राइट। व्हाई? बिकॉज बैकएंड में डाटाबेस में क्रिएट ही नहीं हुआ अभी तक। तो अगर मुझे कुछ डेटाबेस में डालना है तो देन व्हाट आई विल डू इज इंसर्ट, it will create a new record in database, right? Next है हमारे पास sub, and as the name suggests, अगर आपका ऑलरेडी डेटाबेस में रिकॉर्ड क्रिएटेड है, it is already present in the database, then you can update an existing record, right? Now the third one again deletes an existing record. We will do sample of all of these, but for now let's just go through this. Now undelete. Undelete is a bit complex. Why?
आपने ऑलरेडी कुछ डिलीट कर दिया है, तो वो आपका कहाँ पे है, रिसाइकल बिन में है। तो आप रिसाइकल बिन से जब किसी चीज उसको वापस लाते हैं, सो देन ओनली यू यूज अनडिलीट। नाउ द ओनली यूज केस विद दिस इज बेसिकली नॉर्मल कोड के अंदर यू डोंट यूज अनडिलीट एनीवेयर, ओके, बिकॉज अनडिलीट का ऑपरेशन आप क्यों अलाउ करोगे किसी को, राइट? इफ इट इज डिलीटेड, इफ इट इज देन इट्स डिलीटेड। और अगर कुछ डिलीट नहीं होना है तो उसको डिलीट करने का परमिशन ही नहीं देंगे। दैट शुड बी द अप्रोच। बट समटाइम्स undelete is used to run separate script। अगर कुछ स्पेसिफिक कोई प्रोसेस है जिसके लिए कुछ कोड चलाना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एडमिन लोगों के पास सपोज कोई स्क्रिप्ट रहता है जो लिख रखा है, एंड उसको फिर वहां पे अलग से ऐसे ही चलाते हैं जिसमें undelete का ऑपरेशन एज पर नीड यूज होता है। अदर देन दैट यू डोंट डायरेक्टली कॉल undelete। आई हैव नॉट सीन यूज केसेस ऑफ undelete वेरी फ्रीक्वेंट, समटाइम्स आउट ऑफ द ब्लू जरूरत होता है। बट ये करता क्या है, कोई एक रिकॉर्ड अगर आपने डिलीट कर दिया है, उस रिकॉर्ड को वापस फेच करता है एंड फिर से सिस्टम में इंसर्ट कर देता है। सो अनडिलीट इज काइंड ऑफ योर आपके रिसाइकल बिन से जब आप रिस्टोर करते हो कोई फाइल कंप्यूटर में, राइट, दैट इज योर अनडिलीट। सो इट रिस्टोर्स एन ऑलरेडी डिलीटेड record। merge is used to combine two record। merge का operation is a bit complex, so जब हम इसको डिटेल में देखेंगे तब आप पता करेंगे। to combine records, right, मल्टीपल रिकॉर्ड्स को आप कंबाइन कर सकते हो। एंड अपसर्ट as I told you, it is a hybrid combination of insert and update। now what does that mean? it means जब भी आप किसी वेरिएबल पे अपसर्ट का कमांड यूज करते हो, तो वो क्या करेगा, वो पहले सिस्टम में देखेगा कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो क्रिएट कर देगा। अगर उसको मैचिंग रिकॉर्ड मिलता है फिर वो अपसर्ट करेगा, उसको अपडेट कर देगा उसको, राइट। सो काइंड ऑफ एक ही कमांड से आप दोनों ऑपरेशन हैंडल कर ले रहे हो कि है तो अपडेट कर दो, नहीं तो नया बना दो। दैट इज योर अपसर्ट। दीज आर योर बेसिक जो ऑपरेशंस हैं। नाउ वी विल जस्ट गो वन बाय वन विथ ऑल ऑफ दीज। सबसे पहला, हमने वेरिएबल बनाया है लेकिन ये डेटाबेस में तो है नहीं। सो व्हाट इज द ऑपरेशन जो हमको यूज करना चाहिए यहाँ Insert. insert पे? इंसर्ट, राइट, गुड, फाइन। सो लेट्स डू वन थिंग, इंसर्ट वेटनरी, राइट। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं, मेरा क्या होना चाहिए, कोड इंसर्ट हो जाना चाहिए। लेट मी डू वन थिंग, ताकि क्लास में आप लोगों को जब शेयर कर सकूं हूं, आपको प्रॉपर। चलिए अब हम इस क्लास को चलाते हैं एंड देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी इफ इट वाज इंसर्टेड। तो हम लोग पहले बैकएंड पे जाके चेक कर लेते हैं। आई वांट टू यूटिलाइज फिर ऑल अकाउंट्स में हम रिफ्रेश करते हैं एंड डिड इट गेट क्रिएटेड, राइट। ये हमारा बैकग्राउंड में क्रिएट हो गया, Yes. right? So that means your insert operation has worked। now let's do one thing, what I'll do is insert होने के बाद एक बार हम फिर से इसको डिबग करते हैं and I'll do insert again, right। let's check कि insert में क्या चेंज हुआ, कुछ तो चेंज होना चाहिए। see it failed, okay, insert मेरा फेल हो चुका है and it says invalid field for insert। okay, let's check the log, why it failed। हम पूरा लॉग ही चेक करेंगे।
इफ यू सी हियर, मेरा पहला जो डिबग था, जो था मेरा इंसर्ट होने से पहले, वहां पे मैंने खाली नेम का फील्ड सेट किया था, खाली नेम का फील्ड है। लेकिन एक बार जब इंसर्ट हो गया, उसके बाद आप देखेंगे दूसरे डिबग में एक और फील्ड ऐड हो चुका है। व्हाट इज दिस फील्ड? आईडी। नाउ ये आईडी बेसिकली क्या है? दिस आईडी इज द सेम एज दिस आईडी। इस रिकॉर्ड का यूनिक आइडेंटिफायर सेट हो चुका है कि ये रिकॉर्ड अभी डेटाबेस में है एंड ये उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है विद इन द डेटाबेस। तो जैसे ही मैंने इंसर्ट कर दिया, उस वेरिएबल के लिए एक आईडी जनरेट हो गया। नाउ व्हाट डज दैट इंप्लाई? क्योंकि आईडी जनरेट हुआ है मतलब ये डेटाबेस में है, तो क्या हम इस पे फिर से इंसर्ट कर सकते हैं लॉजिकली? नो नो नो।